Hi everyone, welcome to another episode of Last Bench Entrepreneurs podcast. We are very excited to have you all of our listeners. Um, Here we discuss a lot of technology, non-technology, entrepreneurship related things which are affecting us in one way or other as a society. So Ashish, what's the topic for today's podcast? This is a very special podcast Hmm. because it is very near and dear to all of us. पैसा Oh my God, This that is is going to be interesting. yes. अब पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे दादा परदादा भी भागते थे, Right. हमारे पेरेंट्स भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं और बाय डिफॉल्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसी के पीछे भागने वाली है. Because that's the only global language we have. Everybody talks money. सबको पैसे की भाषा सबसे जल्दी समझ आती है. यस. तो सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट. हाँ तो अमृत, क्या बोलते हो, पैसा की ओरिजिन कहाँ से हुई? so it's funny in a way because पैसे का कोई origin था नहीं. Like we used to do barter system initially. यस. As in like, there was no printed money as such. There were no coins. There was no printed money that we have right now. It was mostly about मुझे कुछ आता है, आपको कुछ आता है. So we will do an exchange of services, an exchange of goods maybe. So that way it was called a barter system. तो मेरी गाय बीमार है, आपको ठीक करते आती है, लेकिन मुझे चावल उगाने आते हैं, तो आई विल गिव यू 1 kg ऑफ राइस in lieu of service from you to make my cow healthy again. So that's how it was it was initially because there was no money as such, ओके. right? So then what do you think happened, Ashish? सो विथ दिस रॉयल एम्पायर्स और राजा महाराजा लोगों के आने से Mm-hmm. uh, उस समय जो बनिए थे, Hmm. बनिए इज इन नॉट द कास्ट बट एज अ पीपल जो मनी समझते थे Right. कि इस पैसे से पैसा बनता है. Right. अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम चालू किए. Okay. लेंडिंग, उस समय जो लेंडिंग थी, एक्सचेंज Yeah. ऑफ मनी था, Okay. डिपॉजिट्स थे, वो Right. लोग प्राइवेटली हेल्ड करते थे Okay. और वो मैनेज करते थे. Mm-hmm. फ्रॉम देयर व्हाट हैपेंड इज, ये राजा महाराजा को समझ आने लगा कि चीज़ें कैसे वर्क हो रही है, Right. प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा कमा रहे हैं एंड बाय डिफॉल्ट वो उसका Right. पार्ट चाहते थे. Of course. तो when Mughals came into India, Uh-huh. they brought in this private players plus the government bank system. इन्होंने अच्छा. आगरा, Okay. दिल्ली में ये गवर्नमेंट बैंक सेटअप करे. Mm-hmm. और गवर्नमेंट तो नहीं था बेसिकली, बट रॉयल बैंक्स थे. Yes. और जो पहला गवर्नमेंट लेड बैंक था, दैट केम विथ ब्रिटिशर्स. अच्छा. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, Right. उन्होंने कलकत्ता में पहला बैंक लॉन्च किया. Mm-hmm. एंड फ्रॉम इंडिपेंडेंस, उसके पहले तक ये बहुत सारे प्लेयर्स थे Mm-hmm. जो प्राइवेट बैंकिंग करते थे. Right. बट पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इन सबको नेशनलाइज किया. Right. ऑल एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज ऑल बैंक्स came under national schemes. Right. And they targeted the customers, but Okay. it was not prevailing until 1990s, जब Uh-huh. मनमोहन जी came into power from as a finance minister. Mm-hmm. And from there he opened FDI. Yeah, foreign direct investments. Yes. Yes. And from there जो international players थे, Right. foreign players थे, private players थे, they started getting into Indian market, putting in more money, Mm-hmm. generating more services, Right. or educating people from Right. there. तो वहाँ से Talking about educating people, the current education system puts least preference to, managing finances. Like we were never taught in school or college how to manage money. We were yes, always taught skills to how to bring in money और how to पैसा कैसे कमाया जाता है, but कैसे पैसा कैसे मैनेज करा जाता है वो शायद ये कभी भी नहीं कभी भी नहीं सिखाया गया है. But then that being aside, uh, you know, after this population explosion happened, सकते. we grew, like humanity grew by 100 folds, right? तो अब you know computing systems भी आना चालू हो गए. Of course, the very first the use case जो कि obvious सी बात है, पैसा मैनेज करना, right? So IBM came up with the Z mainframes, Mhm. right? तो technologically they were very advanced for their time actually, you know. Okay. So, but still they were far more inferior. They look very inferior from from our the present perspective because उसमें आपको पंच करना होते थे.
आप उसमें वो पंच करके फीड करो उसको, जो शीट है आपने जिसमें पंच करा, यू फीड इट टू द मशीन, देन इट विल गिव यू एन आउटपुट और अ रिपोर्ट हम्म। probably at the end of the day or the beginning of another day of the next day. So that was very slow, but a lot of banks still use IBM Z systems. But of course, they have grown leaps and bounds in terms of performance now. So technologically wise, humanity has grown just like their population, if you think about it, right? So, uh, so talking about modern times, Ashish, how do you see the current finances and the systems around them? हाथ में मोबाइल फोन्स आने के बाद से Mm-hmm. बैंकिंग सर्विसेज जो है, पेमेंट सर्विसेज जो है, वो यूजर्स के हाथ में बहुत इजीली पहुंच गई। पहले अगर मेरे को पैसे चाहिए होते थे या राइट, ट्रांजेक्शन करना अरे था तो मेरे को डेबिट कार्ड से करना है। राइट, तो डेबिट कार्ड का पिन मेरे को याद है कि नहीं, याद है बाय कि डिफॉल्ट अपने पापा हाँ, लोगों को तो कभी नोबडी याद नहीं रहता, नोबडी वो नहीं हमेशा था। भूल जाते थे। बट देन उसमें फिर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट उसमें डेबिट कार्ड गुम गया तो यू हैव टू गो टू बैंक एंड टेल देम कि यार इसको ब्लॉक कर दो। बहुत मैनुअल दैट सर्विसेज वाज इन्वॉल्व थी। राइट। बट उसके बाद क्या हुआ कि यूपीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? हाँ, UPI is like it is a game changing technology if you think from payments perspective at least. As a vendor, I do not have to wait for somebody to give me a check. For example, then I go to बैंक में जाके मैं चेक डालूंगा, अगले दिन वो चेक क्लियर होगा और बाउंस होने के भी चांसेस कम है, बिकॉज मेरे को पेमेंट यूपीआई में हाथों हाथ मिलता है। यस। ऑल आई हैव टू डू इज स्कैन द क्यूआर कोड एज अ कस्टमर, एंड इनफैक्ट फोन पे ने तो वहाँ पे स्पीकर भी रख दिया है अब कि फोन पे फलाना रुपए प्राप्त हुए। So, like UPI has changed the whole payments game altogether, right? And I see a lot of, a lot of companies growing around UPI only. Phone Pay, Google Pay, a lot of WhatsApp, a lot of people want to get into UPI. Or moreover, Indian government is in talks with other countries as well. यस। Saudi Arabia, Singapore, यूएई। UAE. So they are also interested in getting this UPI technology from us. तो पॉइंट भी, जो टाइम टू ट्रांजेक्शन है उन्होंने इतना मिनिमाइज कर दिया है कि पैसा जो बीच में रुक जाता था Exactly. इन द बैंक, Absolutely. अभी आज मैंने ट्रांजेक्ट किया, द नेक्स्ट मोमेंट इट इज विथ यू। It is with you. जस्ट लाइक Of यू course. नो, सिमिलरली इंडिया ने जो सीबीडीसी लेके आया है, Right. डिजिटल रूपी, Right. इट इज ऑल्सो रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी Of है। course. अभी आज की डेट में यू एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू हैव टू डू एनी रेमिटेंस, Hmm. कितना टाइम लगता है? 4 दिन, 5 दिन। हाँ, of course. अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंटेशन, Right. Right. इतना सारा करना है। आज मुझे कुछ नहीं करना है, इवन इफ माय काउंटर पार्ट डजंट हैव अ बैंक अकाउंट, अच्छा। मैंने यहाँ से परचेज किया, अपने वॉलेट में ई रूपी डाला, हाँ, आई कैन डू वाई यूपीआई हाँ, of course. इंडिया में। हाँ, और वहाँ मेरे पार्टनर काउंटर पार्ट को मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया यहाँ से, और उसके वॉलेट में इट इज डायरेक्टली credited. क्रेडिटेड। सो इट्स अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ एफडी, फॉरेन करेंसी यूसेज। तो अच्छा। आज अगर रेमिटेंस ट्रांजेक्शन है तो मुझे यूएसडी में कन्वर्ट करना है, फिर वहां से उधर जाएगा। अगर मेरा काउंटर पार्ट यूएसडी एक्सेप्ट कर रहा है तो बेटर, और अगर उसने कोई दूसरी करेंसी करी तो अगेन देयर इज अ ट्रांजेक्शन। अच्छा। सो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज आल्सो हाई, हाँ, एंड हाँ, टाइम हाँ, टेकन टू डू द ट्रांजेक्शन इज it आल्सो। also है। उसको Right. मैंने इतना मिनिमाइज कर दिया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स, हाँ, क्रेडिट हो जाएगा क्रिएट हो सामने जाएगा। वाले के। हाँ, बेसिकली नो नीड टू प्रिंट मनी व्हेन यू कैन जनरेट इट, यस। लाइक फ्रॉम आरबीआई's perspective। हाँ, और आरबीआई का इवन कॉस्ट भी कितना कम हो रहा है, हाँ, ऑफ बिकॉज कोर्स, दे डोंट हैव टू प्रिंट प्रिंट मनी। मनी, दे डोंट हैव टू स्टोर इट, इनफैक्ट depreciation cost, everything is removed from here। इफ यू थिंक अबाउट इट, जो काउंटरफिट मनी का भी जो इशू है, वो सब भी that उसको would be डिस्टर्ब कर रहा है। like, because तो there is दिस no printing as such, like you cannot copy e-rupee as far as I know, तो because that दिस इज is अ वेरी फाइन लाइन विथ क्रिप्टो करेंसीज एज वेल, क्योंकि क्रिप्टो में भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही थी, बट विथ सीबीडीसी, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, ये भी करेक्ट, एक अंडर रेगुलेशन ऑफ कोर्स, आ सकता राइट, राइट। बाय द वे, यूपीआई ने टॉफी इकोनॉमी पूरी खत्म कर दी है। है। आई मीन, अब आप अगली बार किसी किराने की दुकान पे जाएं और आप यदि 19 रुपए आठ पेमेंट। 19 रुपए का पेमेंट करें, और फॉर अ लॉट ऑफ पीपल 22 रुपए का पेमेंट करें, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो जो बचे हुए हैं वो आपको, अब आप पूरा डाउन टू पैसा यू कैन मेक अ पेमेंट, यस। रादर देन एक्सेप्टिंग अ टॉफी इन रिटर्न कि यार खुले नहीं है तो टॉफी ले लो टाइप्स। सो यूपीआई they essentially crush the toffee economy internally, सीरियसली right? सीरियसली। Only people who are interested in buying toffee will are going to buy it now. So that is okay. So Ashish, let's talk about banks.
like because those I believe are the, you know, Payment at least counterparts. in present times or current times, they are the most essential. Everything all the money revolves around banks. Yes. For me as a customer, or for me who somebody owns money, everything revolves around Yes. banks only. So banks being infrastructure heavy, Hmm. being heavily regulated by RBI, Mm-hmm. they cannot reach to general public or to tier 3 cities or villages or rural areas very Barabar. easily. Very, of course. So with that comes with this new concepts, or you can say modern instruments of banking, Of like course. neobanks. Acha. So yes, neobanks is very revolutionary. It's Uh-huh. not bank, but Uh-huh. what it does is they are the banking partners. Acha. So uh, imagine a fintech company. Uh-huh. Okay, it doesn't have a banking license, Uh-huh. but they are partnering with the bank, and Acha. they are providing you simple services Okay. like savings account, Right. debit cards, Razor Pay X, checkbook Reserve आपको pay. provide करना है. They also provide checkbooks. I know. सो I know. प्लस उन्होंने उसके अराउंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, जिसमें अगर आप पैसा लेंडिंग में भी यूज कर सकते हो, अच्छा. बाय नाउ पे लेटर में भी यूज कर सकते हो. देयर आर सो वेयर यू अर्न कॉइन्स. सो But they दे are आर not नॉट banks as दे such. आर They don't have banking they license. don't have banking license. they don't Interesting. they don't store your money in their own accounts, but they अच्छा. have the banking partners. So हाँ. basically एक technology partner है that is helping to gain more customers to the company. बट जी, अभी एक और चीज काफी अच्छी चल रही है, यू नो, आई मीन नॉट रिसेंटली, आई मीन these have been there, but I think RBI has been very liberal, not banking finance corporations like NBFCs. Yes, yes, So very close like they have been resemblance. there since a long time, of course, but RBI has been very liberal now to give NBFC licenses, Yes, right? तो अच्छा, ये ना, like credit score, see, banks usually give you loan based on your credit score, correct. right? But NBFCs, they care about your credit score. Of course, उनको भी पैसा, हर की डूबती हुई पार्टी को तो कोई भी पैसा देना नहीं चाहेगा. कभी भी नहीं. But they are a bit liberal. NBFCs, again, I'm using word liberal because banks are not as open to, you know, lending money, right? But NBFCs are. NBFCs are very, you know, very, they have a, like, they do not have a free hand as such, but they give you money rather easily as compared to banks. अच्छा, उसमें भी है ना, अभी फिलहाल I was looking at Bajaj Finance. Mm-hmm. They have grown 25% the June ending quarter of this year. 25% net profit. Net profit. Wow. Like I'm if you, even if you, like, उन लोगों का यदि इतना मार्जिन भी हुआ तो 25% net profit in finance industry is very big, honestly. तो so this is about NBFCs. Like I But really, NBFCs are very close resemblance with is it small finance banks है इसका. I think because small finance banks are very target centric. वो ऐसे customers को target करती है. They are farmers और SMBs हाँ, और correct. Right, micro right. industries, जहाँ पे they have, because they are again under RBI governance, हाँ, तो उनको regulation है कि 25% they have to be present in rural rural area. areas, yes. एंड उनका जो 75% का जो कस्टमर बेस है, दैट हैज टू बी दीज पीपल, नॉट द जनरल पब्लिक, बट दीज फार्मर्स और एसएमबीज. हाँ, तो ये हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहती हैं. of बट course. अगेन बिकॉज दे आर नॉट द जनरल बैंक्स, तो कस्टमर टारगेट जो है, बिकॉज दे आर इजी टू मूव हाँ, एंड easy इजी to टू move सेट with. अप, Yes, yes, yes. I they agree. can reach a lot of customers very easily. By the way, did you know that कि Amazon also lends you money if you are a merchant on their Is it? marketplace? Yes, they do. Seriously? Yes, they do. How? तो Amazon पे क्या होता है कि so essentially this concept is called banking as a service. Okay. Okay. तो उसमें what Amazon has done is they have tied up with banks. Like Shopify is also doing it actually. So they tied up with banks. So as a merchant, you need money to procure more inventory, you know, Yes. right? You want to sell to B2B customers, bulk orders, right? तो उस केस में क्या होता है कि आपका पेमेंट में डिले होता है, फॉर एग्जांपल, या फिर यू वांट टू प्रोक्योर अगेन प्रोक्योर मोर इन्वेंट्री, हायर मोर पीपल. तो Amazon हैज टाइड अप विद बैंक्स एंड दे आर गिविंग लोन्स, मतलब बैंक से टाई अप करके Amazon मर्चेंट को बैंक को लोन देता है. Okay. उसके फायदे Amazon को क्या है कि Amazon ऑफकोर्स टेक्स अ कट whenever a loan is you know disbursed.
अच्छा, मर्चेंट के पास में फायदा क्या है कि उसको जल्दी लोन मिलता है, क्योंकि उसकी सारी पूरी फाइल तो अमेजोन के पास ऑलरेडी है। इकोसिस्टम पार्टनर, इकोसिस्टम पार्टनर है अमेजोन, तो बैंक के पास में जाने की जरूरत नहीं, वो अमेजोन से दे कैन लेंड। फैसिलिटेट करवा लें। फैसिलिटेट, बेसिकली यस यस फैसिलिटेट, यस। एंड द फैसिलिटेशन फी अमेजोन को मिलती है। सेम गोज विथ शॉपिफाई एज वेल, वो भी यही करते हैं, दे लेंड मनी, बिकॉज आई मीन शॉपिफाई इज अ वेरी ह्यूज thing now in India as well. I talk about it. So they are now entering into this thing as well. अच्छा, इसमें ना सबसे एक और बड़ा प्लेयर है टेक्निकली, इफ एट टेक्नोलॉजी वाइज, प्लेड। So Plaid is your, it's a universal login to your all of your bank accounts. सो ऑल अकाउंट्स Yes, जिसमें मेरा आज तक मेरा के बैंक अकाउंट है। करेक्ट, मेरा एसबीआई में अकाउंट है। आई मीन प्लेड इज नॉट इन इंडिया, बट आई गिव यू अ वेरी कंटेक्चुअल एग्जांपल हियर। तो एसबीआई में अकाउंट है, यस बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है, यूको बैंक में अकाउंट है, चार अलग अलग, पांच अलग अलग अकाउंट्स हैं। आई डू नॉट नो कि इसमें कितना पैसा पड़ेगा, कि हर एक के अलग अलग ऐप है। ठीक तो है। प्लेड ने क्या करा कि प्लेड इज वेरी प्रेवलेंट इन, दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स इन यूएस एंड यूरोप। तो उन्होंने क्या करा यार कि दे क्रिएटेड अ सेट ऑफ एपीआईज बैंक के साथ में टाई अप करके, कि आपको सिर्फ एक सिंगल लॉगिन करना है एज अ कस्टमर ऑन प्लेड की एसोसिएटेड ऐप। लाइक प्लेड essentially gives you APIs to build apps upon. ओके Robinhood, for example. ओके। या वेनमो फॉर एग्जांपल, वेनमो इज अ वेरी पेटीएम टाइप, इन यूएस। तो वेनमो को अब, वेनमो के पास में प्लेट की एपीआई मिल गई, तो मैं वेनमो क्या करेगा, वेनमो विल आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर हुआ, या फिर आधार नंबर हुआ, अगेन इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो इट विल पुल ऑल द बैंक डिटेल्स। पैन जहाँ कार्ड जहाँ से पे भी बेसिकली। आपका पैन इंडिया या वर्ल्ड में भी कहीं पे भी आपका बैंक अकाउंट हो, तो वो लेके आएगा, और वहाँ पे आपको वो बता देगा कि इस अकाउंट में इतना इतना पैसा पड़ा है आपका। ओके। लाइक यू डू नॉट हैव टू इंस्टॉल एच डी एफ सी की, यस बैंक की, इसकी उसकी कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक यूजर नेम पासवर्ड ये याद रखो। इट्स अ रिवर्स ऑफ सिविल स्कोर। इट्स हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स, बट इसमें ना सी कंज्यूमर परस्पेक्टिव से इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना। यस, मेरे को 10 तरीके के ऐप नहीं रखना है। मेरे को ये पता है कि एचडीएफसी अगर मेरे को सेविंग्स अकाउंट सेकंड सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट कोर्स, अच्छा दे रहा है, और मुझे आईसीआईसीआई जो है वो एफडी इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है, तो तो मैं दोनों में मैं रख सकता बिल्कुल हूँ करूँगा, और यूनिवर्सल लॉगिन पे चला बिल्कुल सकता करूँगा। हूँ। Is it- तो तो जो लेंडिंग एज अ सर्विस है वो इसी का ही सबसेट आएगा। यू कुड से दैट एक्चुअली। क्योंकि यू सी लेंडिंग एज अ बिजनेस इज ग्रोइंग ह्यूज इन अरे इंडिया। डोंट इवन हर आस्क। हर ई कॉमर्स स्टोर्स जितने भी हैं मार्केट में, दे आर ऑफ ट्राइंग टू, कोर्स, इफ दे आर इनटू बी टू बी और बी टू सी एज वेल, ये अपने कस्टमर्स को इजी लोन्स, इजी बैलेंसेस, ट्रांसफर्स एंड a lot of lending अरे सर्विसेज बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हैं कर रहे हैं। उसमें तो। जब 2008 में हाँ हाँ जब एप्पल लॉन्च किया था अपना हाँ आईफोन फर्स्ट, हाँ, तो कितने लोगों के पास था सही इंडिया बात में? है। लिमिटेड, जस्ट वेरी बिकॉज लिमिटेड, अरे कि स्टोर से परचेज करना सब लोगों के पास की बात नहीं थी, और प्लस उतना हाई कॉस्ट पे करना, उस समय ईएमआई एग्जिस्टिंग नहीं थी। आईफोन है ना, उस टाइम का पेजर था इंडिया में, कि नोबडी वुड ओन अ पेजर बिकॉज इट वाज अ वेरी कॉस्टली वेरी मशीन टू कॉस्टली। ओन। वो मोटरोला का फोन, फिर उसके बाद में नोकिया, एंड देन दी इट वाज वेरी अफोर्डेबल टू ओन अ फोन। तो यस, आईफोन उस टाइम का पेजर था इंडिया में। तो उस समय इट वाज नॉट पॉसिबल, बट राइट नाउ अगर आपको आज अगेन देयर आर सेल्स गोइंग ऑन, अरे तो इफ यू वांट टू परचेज आईफोन, you just go to their website or go with this sales page, जहाँ से they provide you easy EMI option, ईएमआई ऑप्शन, और they provide एब्सोल्युटली। instant cashbacks and a lot of services. So luxury goods का जो सेगमेंट था, जो पहले इंडिया के पास में नहीं, बट इंडियन पब्लिक इतनी जल्दी उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी, बट नाउ विद दिस स्पेसिफिक दिस सर्विस हम लग्जरी गुड्स को इजीली ओन कर पाते हैं। ऑफ हाँ, कोर्स if we don't have the bank balance, that दैट्स अ is a second डिफरेंट totally different aspect. like if you can repay the loan, like ultimately it's a loan on you only, right? It's a You loan have raised only. debt. तो बट इसमें ना फेक लेंडिंग एप्स काफ़ी सारी हो गई है, It's ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे। तो an advice to our listeners, please verify the, if you are using any lending app, a lot of scams are going on. mm-hmm. Like they they make you sign a lot of unwanted terms and conditions, राइट। तो आई रिमेम्बर द तारक मेहता का एक एपिसोड, जिसमें भिड़े वाज मेड टू साइन अ 10% इंटरेस्ट रेट पर Per डे का, month, per पर month. डे का, अच्छा, दैट per वाज day. पर डे का। Okay. या सो यस, सो देयर आर एप्स, यू नो सो So what they are, these apps, what they are doing is they are spoofing big banking players,
उनका नाम लेट से पीएमआई ग्लोबल, ग्लोबल, हाँ आई पीएमआई रिमेम्बर ग्लोबल दैट, प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम स्पूफ किया, कैपिटल की जगह स्मॉल में स्मॉल है। पीएमआई लिखा, एंड आई अपलोडेड द ऐप टू प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, जस्ट बिकॉज की नेम रिजेम्बलेंस है, वेबसाइट आई कैन रीडायरेक्ट टू, और वहां से दीज एप्स जनरेट अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्ट दीज स्कैम्स, और जनरल पब्लिक को बहुत इजीली वो नहीं लोग बट बनाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज इफ यू टॉक अबाउट इट, तो प्ले स्टोर का फिर भी लाइक एज अ समबडी हु हैज डेवलप्ड ऐप अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अपन ने भी बनाई है आशीष, यस, तो प्ले स्टोर पे डालना इट्स अ वेरी इजी वेरी टास्क। इजी, गूगल हैज बॉट्स, लाइक यस, दे रिलाई मोस्टली ऑन एआई रादर देन ह्यूमन बीइंग्स। लाइक ऐप एप्स, स्टोर का आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि ह्यूमंस रिव्यू योर एप्स। इट टेक्स 5 to फाइव 7 days, 5 to 10 days इनफैक्ट, कुछ कुछ में तो टू एंड फ्रो करते करते इट टेक्स अ मंथ month, टू रिलीज yes. योर ऐप, राइट? तो उस उसके बावजूद सच स्कैम्स आर हैपनिंग ऑन ऐप स्टोर आफ्टर ऑल दीज वर्ल्ड गार्डन्स एंड ह्यूमन गाइडलाइंस एंड ह्यूमन रिव्यूज बीइंग डन ऑन ऐप स्टोर। इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि स्कैमस्टर्स आर फाइंडिंग वेज और लूप होल्स इनटू द सिस्टम स्टिल। so so technically if you see finance maybe we have to still go a long way to stop such things, See, scams are right? always there क्योंकि जो greed है, human greed is very big, Infinite, infinite. like तो there's no measure अगर of human greed. if there is some app which has a lot of red flags but very few green flags, and अगर मुझे अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है हाँ या अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आई विल look forward कि हाँ, let's try it. हाँ, If they give it for couple or more times, then of course, automatically a trust is there, or I go for buying it. हाँ. But yeah, I mean, just a word of caution to our listeners, please verify all the lending apps or whatever, whoever is your lender, please verify all the documents with them, read all of them very carefully and then only sign them. Yes, Otherwise, you never know when you'll end up in a scam, yes, yes. right? Coming back to our topic Yeah, of lending, yeah, from lending, जो luxury goods मेरा affordability पे आ रहा था, uh-huh. अब now there are lot of apps which are called buy now pay later. Do you know? हाँ हाँ, अरे वो वही मॉडल अपना किराने वाले भैया, जो आप सामान ले जाओ बाद में बिल पे कर देना, मंथ एंड पे, मंथ एंड पे कर हाँ, देना भैया, रजिस्टर में लिख लो, एक बार बस में पे कर देंगे, वही वाला मॉडल है क्या? वही वाला, बस इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स अच्छा, एक्स्ट्रा है। रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं, वो किराने वाले भैया रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते, पर वो आई थिंक वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हाँ, हैं सो यस, यस, तो हाँ, बट या देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ लेट बाय नाउ पे लेटर में, जेप्टो फॉर एग्जांपल इज Zest Money, I think, not Zepto, I'm sorry, but Zest बेस्ट Money is one मनी, of the जुपिटर, या Jupiter, and they are one of the leading buy now pay later thing. But it's risky, है ना? Like it's very risky if you think about it. Like I want to buy a 50,000 का iPhone या 1 lakh का iPhone. If I do it to buy now pay later types, so like it's very risky. Like of course they go through all the CIBIL score and all to determine the how risky is their lending is to us or to the buyer who's going to pay later, but sometimes that letter never comes actually. दैट हैपेंस, और उसी कारण से इस तरीके के एप्लीकेशंस ने पैसा तो रेज कर लिया, बट व्हाट हाँ हैपेंस ऑन लेटर स्टेज इज दे कुडंट टर्न प्रॉफिटेबल, हाँ एंड दे क्लोज डाउन, हाँ, बट लाइक और दे इट्स, पाइवेटेड. हाँ मतलब इट्स वेरी अनरेगुलेटेड स्पेस, आई मीन देर इज नो गाइडलाइन एज सच कि यार आपको इतना ही, आप देर देर इज टू बी सर्टन अमाउंट आपको लेना ही है कस्टमर से। लाइक मैंने देखा है कि कुछ केसेस में आई इनपुट माई मोबाइल नंबर, तो मेरे को तो लाइक दे आर अलाउिंग मी टू पे 100% आफ्टर अ मंथ और 3 months। I don't know how that happened, but it's very unregulated space if you think about it. I'm not sure, it might be regulated, but मैंने तो एटलीस्ट ऐसा नहीं देखा है, जितना मैंने देखा है और सुना है या खुद भी एक्सपीरियंस करा है। बट दैट्स व्हाट, अगर कस्टमर सेंट्रिक जाना है, जनरल पब्लिक तक जाना है, तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क गेम, जहाँ पे यू आर जजिंग देम जस्ट बाय द सिविल स्कोर, नॉट बाय द कैपेसिटी टू पे. यू आर जस्ट फॉरकास्टिंग कि हाँ, इसने आज तक पे किया है तो ये आगे भी पे कर दे. हाँ एग्जैक्टली exactly. बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता ना. हाँ, कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है, विजय माल्या इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, राइट? बट माय कॉर्पोरेट, बैड. सो कॉर्पोरेट में लाइक, सो अभी अभी इफ यू वांट टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हाँ, like it is like 1000x costlier than buying an iPhone, right. like 500x or 100x if not 1000x, but तो you just can't go कि यार मेरे को कार लोन चाहिए या होम लोन चाहिए, सिविल के स्कोर बेस पे. हाँ, या फिर होम लोन भी चाहिए तो आई हैव समथिंग कोलेटरल, या कार लोन चाहिए तो आई हैव समथिंग कोलेटरल, या फिर आई एम रेडी टू पे इंटरेस्ट।
So corporate banking is uh, it's a very it's a very profitable business for these banks. Yes, And talking about banks, actually, like banking itself, I'm not sure. It sounds very oxymoronic to me. Banking cannot be a business. Lending can be a business. default. I mean, like banks. I don't know why we call it a banking industry, not a finance industry. Because bank cannot be an industry. See, all I do is give my money to bank because I bank upon them. Like I That's trust them. They'll yes, not go under, and they will pay me some interest. है yes. ना? अभी वो बैंक कैसे पैसा कमाती है वो तो उसके ऊपर है ना यार, कि वो आगे पैसा किसी को चला रही है, कि कहीं इन्वेस्ट वो कर उनका रही फाइनेंस है, मॉडल है वो ना. उनका फाइनेंस मॉडल है। तो बैंक थोड़ा ना हुआ वो, मतलब बैंक हुआ वो, बट लाइक बट दिस इज व्हाट, ये पूरा गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड, कि दे फोर्स यू टू कीप योर पर्सनल मनी इनटू बैंक हाँ सो दैट दे कैन लेंड यू और सम अदर पीपल लाइक यू हाँ टू फुलफिल योर नीड्स एंड हाँ वांट्स, एंड फिर वहां से आगे हाँ, I mean, coming इट्स अ back ट्रैप. to again, it's a trap. Like, coming back to our example of starting a manufacturing unit. So that's when the institutional banks come into play, यस. right? So they are big corporate banks, जहाँ पर आप जाते हो, आप you present a plan to them saying that okay, I want to start a manufacturing business, for example. This is where I'm going to get the raw material. I'm going to get the this is what is my finished good is going to cost. This is the margin, and then they read your complete business मॉडल report, प्रपोजल. model, proposal, and then they decide to lend you certain amount of money. So sometimes in some cases I've seen that they also buy some equity from you. यस. In some cases, they charge you, equity plus interest. In some cases, they charge you only interest. In fact, अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इज आई थिंक इट्स कॉल्ड उद्यम सम I'm forgetting name. I'll probably put the link into the description. But the government is now guaranteeing 85% of return, like 85% of coverage. Like if you fail to repay your loan, the government will pay it वाओ. up to 85%. तो आपने, if you take a 1 crore 1 CR का लोन, 1 crore का लोन under that scheme, so government will repay 85 lakhs to the bank. But the bank will charge you, of course, 12%, 30%, or whatever their interest rate is, based on your business model and all, inventory levels and all. तो उस केस में the government of India is now promoting SMEs this way as well, 85% बट of इसके अंदर guarantee, actually it's called guarantee, yeah. नाइस. बट इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स ने भी कुछ एक नई स्कीम लेके आए, व्हाट व्हाट इट इज कॉल्ड एज इनवॉइस डिस्काउंटिंग. तो इनवॉइस हाँ, डिस्काउंटिंग में क्या होता है, एक कॉर्पोरेट ने दूसरे कॉर्पोरेट के लिए सर्विसेज ऑफर करी. अच्छा, ठीक है, देयर इज अ गैप, क्योंकि जो इनवॉइस पेमेंट साइकिल है, दैट इज, लेट्स से इट टेक्स 2 to 3 months. हाँ, it's very common actually. एंड फॉर द मैन्युफैक्चरर और फॉर द सर्विस हाँ प्रोवाइडर, हाँ उसको प्रॉब्लम ये है कि ही नीड्स द रोटेशन. हाँ, कैश तो फ्लो तो ये चाहिए। कैश फ्लो चाहिए, बिना उसके तो वो आगे काम ही नहीं करेगा. तो हाँ, व्हाट दे डू इज, मेरा 1 करोड़ का इनवॉइस है, दे पब्लिश इट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, हम्म, एंड डिटेल की पब्लिक से they pay 10,000 in parts, and from, let's say they take 1,000 people, हाँ हाँ, और उन्होंने सबने 10-10 हज़ार रुपए देकर इसको 1 करोड़ रुपए दे दिया. अच्छा, जब वहां से पेमेंट क्लियर होगा तो हाँ, दे विल गेट लाइक इंटरेस्ट ऑफ 10-12% पर अच्छा, ईयरली. और यहाँ से द बायर ऑफ दिस इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, वहां से वो अपना 2-3% का 3 महीने में अच्छा, वो भी बना परसेंटेज कमा लेगा। सकता है. अच्छा, So द the प्लेटफॉर्म इटसेल्फ मेक्स मनी, platform makes money, the buyer द लेंडर earns, टेक्स मनी takes इन money, फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। हाँ everybody is happy. हाँ This is the positive case. हाँ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव केस, बट आई मीन, सी entrepreneurs essentially breathes on hope. We are fueled by hope. Yes, So this is another way of leveraging that hope कि यार मेरा इनवॉइस तो क्लियर होगा, because see, if you're the other party is of course it's a big MNC, right? तो हाँ, सामने वाली पार्टी, लाइक वट एवर हुएवर इज योर, आपने किसी को बिल दिया है तो वो सामने वाली पार्टी यदि इट्स वेरी ट्रस्टवर्दी, बड़ा नाम है, तो दे विल ऑब्वियसली क्लियर इट, बट ऑफ कोर्स सबका सबकी अलग अलग पीओ साइकिल रहती है। तो या दिस इज अ वेरी गुड वे टू हैव मनी बिफोर हैंड, ऑफ कोर्स एल्बिट विद सम यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट ऑन इट, बट 3 महीने के लिए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल इफ यू आर वर्किंग विद वेरी बिग क्लाइंट्स who are paying you continuously, without any leakage as such. So it's a very तो बाय द वे, क्या आगे, क्या मतलब, ये तो वो वेब 2 पे बात हो गई। तो मैंने सुना वेब 3 भी बड़ा कुछ तो कर रहा है। नहीं, Web3 is a very big economy. Currently, it's a $1 trillion economy. हम्म, Last cycle में it was like
$10 trillion इकोनॉमी। अच्छा, हाँ, तो अभी तो ठीक है, मार्केट इज डाउन, दैट इज बट व्हाट दे डिड इज, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्कैम्स चलते हाँ, हैं, अरे बट अब डोंट वी आर डिफाइन। टॉकिंग लाइक फिनटेक। तो विद द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, हम्म। वहां पे उन्होंने जो सारे हमने अभी तक जितने वेब टू के प्रोडक्ट के ऊपर हम्म। बात करी, दे हैव ब्रॉट इट इनटू वेब थ्री, अच्छा। explaining what is decentralized हाँ finance. हाँ। So let's say you have 1 lakh rupees, हम्म। okay, and you want to invest somewhere, ओके। okay. तो आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स देखे, हम्म। यू हैव टू की देयर विल बी बैंक एज अ मीडिएटर, अच्छा। ठीक है, यू हैव टू हैव योर बैंक हाँ, ऑफ अकाउंट, कोर्स, देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू ऑफ समवेयर, कोर्स। राइट। बट इधर जरूरी नहीं है, हम्म। सो यू आर नॉट बैंकिंग अकाउंट टू बैंक, बट हम्म। यू आर द ओनर ऑफ योर एसेट। तो यहाँ पे एक प्राइवेट डिजिटल वॉलेट comes into अच्छा। play where you keep your money, you हाँ। you safeguard it, you secure it, it's all up to you। आज की डेट में बैंक डूबता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट आरबीआई टेक्स केयर ऑफ इट। हाँ, इधर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा वॉलेट डूबता है तो इट्स अप टू यू, क्योंकि आपका वॉलेट हैक हो आपका ही गया वॉलेट, सिक्योरिटी कंसर्न्स पे हाँ, है। तो आपके बट ऊपर है वो द तो। होल फाइनेंस इंडस्ट्री इज ओपन इन अ न्यू सेगमेंट, जहाँ पे पीसेस ऑफ कोड ये पूरा बैंकिंग सिस्टम चला रहा है। अच्छा। यस, सो इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी, और यहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आप यू हैव लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप मार्केट में किसी प्लेयर्स को, और पीस ऑफ कोड जो है वो रन हाँ। करेगा, एंड इफ दे मेक मनी यू विल मेक मनी। इंटरेस्टिंग। एंड अगेन एफडी का मतलब कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी, वहां और पर भी वहाँ है, पे भी एक्सेप्ट कि आपको, वो इट्स नॉट अप टू अ बैंक यस और सम इंस्टीट्यूट टू टेक केयर ऑफ योर मनी, इट्स यू हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर यस मनी। हाँ, इंटरेस्टिंग। आई मीन द सिक्योरिटी ऑफ कोर्स लाइज विथ यू ओनली। यस, हाँ। बट इसमें यही है कि बिकॉज, तो हमारा एग्जाम्पल था कि बैंकिंग में हमें बैंक क्यों चाहिए, हाँ, I need bank, why we need it, so they have their own concept of we don't want our money to be in a privately held system, कॉर्पोरेशन और corporation, where they are earning money from my money, फ्रॉम माय मनी। so right here मतलब बैंकिंग ऐसे में ना। देखा जाए तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बैंक गिव्स यू द एफडी एंड द बैंक रन्स दैट मनी ऑन इंटरेस्ट, दैट इज देयर, आई थिंक दैट इज देयर मॉडल ना। तो जो डिजिटल रुपया आया सीबीडीसी के साथ, हाँ। दैट वाज बैंक्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पे रेमिटेंसेस, सम ऑफ द ट्रांजेक्शन व्हाट हैपेंड इज $1 million का ट्रांजेक्शन हम्म। हैपेंड विद इन लाइक 3 or 4 minutes। अच्छा। Can you believe it हाँ, in it's our not, no, traditional no, banking it's not, system? no, no, no. It's not possible. नहीं, they'll need a lot of signatures, a lot of आप सर आपने ही करा है ये, पक्का इतना ही करना है, तो इट्स विल Yes, so these people are very technology enthusiasts, और ये they rely on the technology and the to transaction make the happens in, decision for them. yes, I mean, there is no human intervention. There might be some human intervention, but not exactly कि यार ब्रांच से फोन आ रहा है, सर ये पक्का ये चेक आपको आपने दिया है, इतनी सारी अमाउंट का है सर, इतने पक्का तुम्हारे पास इतने पैसे है कि इतने नहीं पे है। है कि नहीं, आपके पास इतने पैसे कब आए हमको तो मालूम ही नहीं है। Yes. तो इट्स लाइक, बट या आई मीन द फ्यूचर तो यार वेब थ्री के अलावा भी, लाइक इफ यू टॉक अबाउट, अभी जो एआई भी काफी यू नो काफी ज्यादा, मतलब आई आई वाज रीडिंग एआई ड्रिवन, यू नो ये एचडीएफसी और पेटीएम ने मोस्ट रिसेंटली दे हैव डेवलप्ड लोन इंजन्स, Okay. like so they feed data to it, history, a lot of things. By the way, talking about history, there is a concept of account aggregators as well. अच्छा। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स में क्या है कि सी इफ यू वांट टू टेक अ लोन, तो आपको हम्म, ना बहुत सारे पेपर देना पड़ता है। अभी yes. वो पेपर में सभी मांगते हैं कि आपकी लोन हिस्ट्री पुरानी क्या है, आपका एफडी कितना है, आपकी असेट्स कितनी है, ये वो। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स विल aggregate all of your bank accounts, your assets, your investments, mutual funds, portfolios, blah blah blah, whatever. So they'll give you one account on on some website. हम्म। So there are few players into it. So which you can share with the lending company, या जिससे भी आपको फॉर एग्जांपल लोन लेना है, ओके। राइट। तो अब वो ऑब्वियसली आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, तो आपको सारी फाइलें नहीं देना है, आपको वो अकाउंट का एक्सेस जो है आपको उठा के उनसे शेयर करना है। जब काम हो जाए तो एक्सेस रिवोक कर लो। अरे, दिस इज गुड। दिस इज गुड। नाउ कंबाइनिंग दिस विथ एआई, because there is a lot of data being at this moment, you know like millions of transactions are happening in India itself। वर्ल्ड में तो बिलियंस के उसमें हो रहे हैं, इंडिया में यूपीआई के बाद में तो पर्टिकुलरली इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं छोटे छोटे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा being gathered right now।
तो एआई यूज करके सी बेसिकली दीज कंपनीज, पेटीएम फॉर एग्जांपल, दे वांट टू रिड्यूस द टाइम टू लैंड, दे वांट टू ओके, रिड्यूस द टाइम कि यार मुझे डिसाइड करने में, अभी तो क्या लोन डिसाइड करने में टाइम लग जाता है ना, देयर इज अ सीए हु रिव्यूज योर फाइल, सेल्स वाला प्रेशर बनाता है सीए पे कि नहीं यार इसको तो लोन देना ही है, मंथ एंड चल रहा है फॉर एग्जांपल, सो एआई विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज एआई ऑलरेडी हैज द डेटा, द engine, ओके, like the engine has been fed data, right? So it will draw some inferences from that data, then it will, you will feed you more, more input data, then it will decide. the अभी इसमें क्वेश्चन यही है यार कि like how do you trust AI with the accuracy of the data, like it may हमेशा, reject a very good yes, that's why account. human intervention is needed. Let's say 80% of work is done by AI, but 20% has to be done by human, right? हाँ मतलब 100% आफ्टर resolution. सर्टन थ्रेशोल्ड की, Yes, लाइक आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, थिंक ह्यूमन इंटरवेंशन वुड बी रिक्वायर्ड एनीवे, yes, राइट? अच्छा, दूसरा इसमें ना इन्वेस्टमेंट में भी आजकल पोर्टफोलियो भी ए ड्रिवन हो गए। yes. ग्रो का एक रोबो करके है, एक रोबो, लाइक ग्रो रोबो करके उन्होंने एक एआई असिस्टेंट निकाला है। सो इट गोज थ्रू योर इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, यू नो Mm-hmm. मेरी तो लॉस में ही होगी बट एनीवे, तो मेरे को तो कुछ सजेस्ट भी नहीं करेगा वो शायद, कि आप तो रहनी ही दो, आपसे तो होने ही नहीं वाला है। तो दे विल दे विल यू नो दे विल क्रिएट एंड मैनेज द पोर्टफोलियो। इट इज Wow. सम हाउ समवॉट कंप्यूटर लाइक ट्रेडिंग, लाइक देयर आर सिस्टम्स ना जो चलते AI हैं, generated. फ्यूचर एंड Yes, ऑप्शंस yes, की जो yes. चेन बनती है, यू जस्ट स्टार्ट द एल्गोरिथम, फीड इट सम मनी, एंड देन इट विल जस्ट रन इट ऑन इट्स ओन। Yes. So some kind of that, of course it will be more accurate because it has your history, it knows your pattern, Patterns. Yeah. yeah, it knows market के patterns. So अच्छा, इसमें AI और ML के थ्रू है ना, they are also reducing the time to do KYC as well, बिकॉज अभी अगर आपके फोटो पास अपलोड डेटा, करा, yes. फोटो अपलोड करा आपने, आधार भी अपलोड कर दिया, तो इट विल मैच कि यार ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। फिर आपने लाइक यू हैव टू डू अ वीडियो KYC. केवाईसी एज वेल, तो एआई कैन डू दैट, like it can extract frames from the video and then it will match it against the Aadhaar ka photo, Mm-hmm. right? So it reduces a lot of human intervention. But see, problem being, यहाँ you are reducing human intervention, plus you are having a lot of closed systems as well here. So transparency for the customer is a big drawback हाँ हाँ, in ऑफ this कोर्स, वो whole तो है, banking industry. वो तो है ही यार, लाइक So दैट हैज बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, आपकी yes, मैनेजर से पहचाने, लाइक आई एम नॉट yes, जनरलाइजिंग इट, प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट people exploit the system one way or the other. we have seen we have seen it being exploited when there was नोटबंदी as well, नोटबंदी के टाइम पे भी people exploited the system, yes, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, फार्मर्स भी, लाइक यू बिग, सुहाना खान आई थिंक इज अ फार्मर, yes, अभिषेक बच्चन इज अ फार्मर, yes. द सिटिंग एमएलए एमपी जया क्या बच्चन बच्चे? जी इज अ फार्मर, दे आर ऑलरेडी exploiting the system anyway. बट So बिकॉज ऑफ दिस, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, लेट्स से मैं लोन लेने जा रहा हूँ एंड यू आर अ हाई प्रिविलेज पर्सन विद अ बैड बैंकिंग हिस्ट्री एंड यू आर गोइंग टू टेक अ लोन, और तुमको ग्रांट हो गया बिकॉज यू हैड द कनेक्शंस, तो मुझे नहीं हुआ। बाय, बिकॉज मेरे पास कनेक्शन नहीं थे, बट मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं है कि मुझे हाँ, क्यों नहीं कि मिला। मुझे क्या और करना मेरे पास, चाहिए कि सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मे बी सिविल स्कोर, yes, या फिर मे बी there मैं, is no guidance, there is हाँ no अपने, guidance, so that's why players like Web3 ecosystem यहाँ पे इतना डेवलप हो रहा है इंडिया में कि दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर एसेट। मुझे लैंडिंग चाहिए, आई हैव गुड वॉलेट हिस्ट्री और हाँ वॉलेट हिस्ट्री, गुड वॉलेट बिकॉज हिस्ट्री। दैट इज देयर ऑन द लेजर Yes, इटसेल्फ, and it is हाँ, very transparent. So वहाँ पे आपके पास वेब3 में पूरा फॉर लेजर है, दिस कोई भी पर्टिकुलर बंदा देख सकता वॉलेट, है। हाँ, Yes, if there is a history, the lending can happen. अगर आपके पास एक set of tokens है, इसके बेस पे you want to get the money, yes, that is so happening. now I think about it, if you combine this, this transparent data with AI, Yes, so I get to see, because there are a lot of open source AI frameworks as well. After ChatGPT, GPT in particular, there have been a lot of Llama 2, for example, Facebook का जो है, it is open source, and it can do a lot of good number of, you know, good number of accurate inferences. So and this is going to be another game-changing thing if you think about it. If I feed the transparent data like from the blockchain ledger, maybe then I get to know, on top of it, I apply an open source AI, algorithm.
सो आई गेट टू नो दी कि यार ऐसा डिसीजन एआई ने लिया तो किस बेसिस पे लिया, बिकॉज आई हैव द, Transparent हाँ, history of the the data. whole thing is Yes. white box now, it's not black box. Black box. Yes. The So whole thing is, the world with the advancement of technology, Web3 के आने के बाद अभी एआई इतना बूम पे है, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू एआई ड्रिवन हाँ सिस्टम्स, तो इसके कॉम्बिनेशन से या इंडिविजुअलिस्टिक भी हाँ, टेक्नोलॉजी इज वेरी पर्टेनिंग एंड इट विल हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। प्लस कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर को प्रेफरेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा मिलता है। वो तो है ही, मतलब बेसिकली दी, बैंक में पहले होता था ना कि यार टू बिग टू फेल, इतना तो दे ही दिया है इसको, इसके आगे भी और देंगे तो क्या ही होगा। हाँ Although बट they सी end up being देर Vijay इज Mallya's or Nirav Modi's of today. But you know, I mean, you understand what I'm saying. The black box is so strong कि there is a need of transparency for so sure. there is a great saying, there is a quote from someone, the bank will give you money if you convince you don't want it. हाँ, If you want it, they will never give it to ऑफ you. कोर्स ऑफ कोर्स, ये बात तो सही है कि यार अभी तो जरूरत ही नहीं है आपका, अच्छा चलो दे दो। So Great. yeah, I So mean, but yeah, the system needs transparency for sure. yes. So yeah, guys. So we are at the end of part podcast, and hope you like it. So we have gone through the banking systems, the finance systems, plus the technological impact on the whole system. So So yeah, it was like I would say it was a good discussion, Ashish, yes, because while doing a lot of R&D, when I came to know a lot of new things about this, finance thing, and as I said in the starting of the podcast, हम लोगों को पैसा कमाया सिखाना, कमाया कैसे जाता है वो सिखाते हैं, मैनेज करना कभी भी नहीं आता कभी है। भी नहीं सिखाते हैं। तो एंड पर्टिकुलरली इन दिस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज ऑफ आवर टाइम्स, इट इज़ एसेंशियल टू नो कि कहाँ पर आपको बाय नाउ पे लेटर करना है और कहाँ पे और लैंडिंग कहाँ पर, सर्विस यूज करना है। लाइक डू यू इवन नीड दैट सर्विस, डू यू नीड दैट गुड, डू यू नीड दैट थिंग दैट यू वांट टू बाय, यस right? The technology is kind of like on a closing note, I would say that technology is, you know, while it is Web3, for example, Ashish, it is bringing transparency to the system, but it is also, compelling people to spend more, दैट्स even if ट्रू। they don't have it. So that's kind of like not exactly an advice from us, but we would we would suggest to maybe save first then spend first. I don't know. यस। सो मूविंग अवे विद द यूएस कल्चर, यू कैन से वहाँ पे बंदा क्रेडिट पे जीता है, और इंडियन इकोनॉमी जो थी आज तक भी Savings पे, सेविंग्स पे ही जीती है। savings पे. सो इफ यू कीप दैट माइंडसेट, आई थिंक दैट विल गो इन द लॉन्ग रन फॉर Of अस। course, of course. So that's all for this podcast, guys. We hope you liked it, and thanks a lot for watching. We'll see you इन द नेक्स्ट in the next. पॉडकास्ट। Yeah. थैंक यू।